it. Okay, we don't have it. It word, English ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ replace ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you replace it with the word it. But here we don't have anything in the name of it. So we have to create it. Okay, so it we have to create here. And for that it is like for je, you will use M-E or M apostrophe. For tu, you will use T-E or T apostrophe. And for ill, you will use L or L apostrophe. And for ill, for L, you will use La or L apostrophe. Nu, you will use Nu. Vu, you will use Vu. And for ill, you will use Le. And for L, you will use Le. Okay. Now, what is compliment direct? Compliment direct. दो चीज़ां नोट कर लो अपनी कॉपी दे उत्ते प्लीज. Compliment direct replaces person as well as object. So compliment direct replaces person as well as object, and it comes before the verb. And it comes before the verb. So two things. It replaces people as well as what else, please? Object. Object. Yes. Object. Please cameras on kar lo, everyone onto your this please cameras on kar lo. Okay, so compliment direct replaces people as well as object, and it comes before verb. These are the two very important parameters that we need to remember. It replaces people as well as an object, and it comes before verb. Okay, before verb. It comes before verb. Okay, got it? Got it? So here you see let's close this and let us go to here and आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा? Now let me share the screen here. Okay, so are you there? Okay, so now let's you see. Now I'm writing here, I am watching TV. So how will you say this? I'm watching TV. Je मैं regarde télé. je la Television. Télévision. télévision. Je regarde la télévision. I'm watching TV. Now you see, this is basic French. I'm watching TV. You know? If someone is questioning you, so you say, are you watching TV? To आप बोल रहे हो, yes, I'm watching TV. You know? But you say, I'm watching it. Now, if you use good phrases, then it is I am, yes, I am watching it. Yes, I am watching it. Okay, yes, I'm watching it. So this is what it is. What here? Compliment direct. It is replacing what? It is replacing what here? The TV. Television. So television is what? It's an object.
It replaces complément direct. We call it as COD. Complément direct replaces people as well as object. So we are doing it for the object. So I'm watching TV. Je regarde la télé. Yes, I'm watching it. Yes is what? We. Oui, je regarde la. Je le regarde. Now television is masculine or feminine? Femina. Je la regarde. Je la regarde. Je la regarde. I am watching it. Oui, je la regarde. So it is coming before the verb. Verb is this. It is coming before the verb and it is replacing object. La is coming before the verb and it is replacing the object. अभी नेगेटिव में जाएंगे अभी हम नेगेटिव नहीं कर रहे let's do more. I am eating chocolate. Je mange le chocolat. Je mange le chocolat. Now, I'm eating it. Je la mange. Je Je le le mange. mange. Because chocolate is what? Masculine. So, je le Mange. Je le mange. Je le mange. I am reading a book. I'm reading a book. Je lis le livre. Livre. I am reading it. Je le lis. Je le lis. Je le lis. Yes. Je le lis. अब हम इसी को पकड़ते हैं Je le lis. I'm reading it. Now I have to say I am going to read it. Je I vais am la lire. going to read it. I'm going to read it. So हमारा जो concept है वो क्या है? Concept. It replaces object and it comes before the verb. So हम इसको पहले तो simple बनाते हैं. I'm going to read it. How will you say? Je vais. Je vais Je vais lire la livre. Je vais lire. le livre. Je vais lire le livre. Now we have to replace what? Le livre. Okay, the book. And it comes before the verb. So ये बन जाएगा je vais le lire. I am going to read it. Je vais le lire. जॉन सी वर्ब को कर जॉन से ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं वो रिप्लेस पहले आएगा Je vais le lire. I'm going to read it. अब मैं बोलता हूं I will read it. So how will you make I will read it? लीरा Je lirai la livre. No, je simple लिखेंगे I will read it. जो ल Lirai. लिवरे Je le
Live. or you do it like this. I will Lire. read the book. ऐसे करते हैं. I will read the book. Je Leer की full form Lire. क्या है? Leer right? Leer. lire. Je lire le livre. I will read the book. Je lire le livre. और जब हमें इसको बोलना है I will read it. So je le lire. This will become I will read it. Je le lire. Je le lire. I will read it. So आपका प्रेजेंट हो गया. Je lis le livre. Je vais le lire. Je le lirai. प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों हो गए. अब चलते हैं पास्ट में. I have just read the book. So how will you write it? I have just read the book. Je viens de Je viens de lire Je le livre. viens de lire le livre. So I have just read it. Je viens de le lire. Je viens de le lire. I have read it. Okay, je viens de le lire. अब बनाते हैं इसको हम पारफे में. हम पारफे किया आप लोगों ने. तो I was reading it. So how will you write it? I was reading it. Or I was reading a book. ऐसे करते हैं. I was reading a book. Je lisais J'étais. le livre. Je lisais le livre. Je Ah, lisais le livre. So इसका हम क्या बनाएंगे? Je Le lisais. la lisais. Je le lisais. Je le lisais. I was reading it. You see, I was reading it. Je le lisais. I was reading it. Then let's make here this one. I have read the book. How will you see? I have read a book. I have. j'ai lu le livre. J'ai J'ai lu Why? J'ai livre. lu le le livre. livre. अब इसका क्या बनेगा? Je J'ai le livre. J'ai le livre. l'ai lu. Je l'ai lu. एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप पासे कंपोजिट में बनाओगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा. कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट विल कम बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब. So je l'ai lu. I have read it. बाकी सारी को फिर सब बाद में आएगा. Yeah. मियाँ के बाद आएगा. Yes. Take a minute. Go through it.
we have done with 6 tense futures. Past, present, future, all covered. Any question, please feel free to ask. Take a minute. If you have any question, please feel free to ask. I'll revise it, then we will practice it more. This is all your complement direct. इतना घबराने की क्या बात थी इसमें? Complement direct. बस इट्टां सी बनानियां होंदियां, इट्टां आपां बना लियां, ल ला लगाओ. Okay. In English, you have the word it. Here, you don't have the word it. You have to make it. Digest it in a minute, and then we'll start. Okay, so shall we move up ahead and practice more? Done? You want to ask anything? No, no, monsieur. No? Okay. Then let's do Je mange la pomme. How will you do it? Je la La mange. manche. Yes, quickly मुझे जवाब देते जाओ, हाँ? Il regarde le film. How will you do it? Il Il regarde. regarde. Il le regarde. Very good. Il le regarde. Très bien. Next, elle aime Paul. Paul, you say. L, Elle L, aime. L Elle M aime. Elle l'aime. L'aime. Love. L'aime. Elle l'aime. Okay. So Paul is what? Paul is not an object. Paul is a person. So we replace people as well as object.
Object. Yes. So euh, je achète les livres. Lila. Acheté. Je l'ai acheté. Je les achète. Les acheter. Je les achète. Je les achète. अब हम तैयारी करते हैं टेफ के एंगल से। ये समझ लगी आपको? अब हम Oui, B1 monsieur. टेफ वाले एंगल के ऊपर आते हैं। अल्टीमेटली आप सबने टेफ का एग्जाम देना है, सो टेफ के ऊपर हम प्रैक्टिस करें। सो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस टेफ के ऊपर, je préfère je préfère cette solution. Je préfère cette solution. Je le. Je la préfère. Je la préfère. Je la Je la préfère. Yes. ये मात्राएं डालोगे ना? Oui. हाँ, दो आ रही है। ठीक है, je la préfère. Then you see in the TEF you will use this word a lot. Apprécie. Appreciate. To appreciate. Apprécie. Oh, je énormément apprécie ça. Ok? So, je apprécie ce programme. J'apprécie ce programme. J'apprécie ce programme. I appreciate this Je program. l'apprécie. Je l'apprécie. Yes, je le L'apprécie. l'apostrophe, je le apprécie. Je l'apprécie. Oui, je l'apprécie. Okay. Then you can use phrases like this. Les réseaux sociaux. E with an X-O. E with an X-O. Okay. Les réseaux sociaux. Results. What is ratio socio? Social media. Okay. Les réseaux sociaux. Social media. Les réseaux sociaux. Je les utilise souvent. मतलब अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बढ़ रहे हैं आपके। les réseaux sociaux. Je les utilise souvent. अब मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं बोला les réseaux sociaux और फिर मैं je réseaux sociaux j'utilise beaucoup, non. So this is les réseaux sociaux. Oui, je les utilise souvent. इसको ऐसे भी कर सकते हो, les réseaux sociaux. Oui, je les utilise souvent. Social media, yes, I use social media a lot. Yes, I use it a lot. Yes, I use it a lot. Okay. Now, the next example which you can make with this, which is very common and we'll be using in TEF, cette idée, je la trouve intéressante. Cette idée, oui, je la trouve intéressante. Cette idée, oui, je la trouve intéressante. Tu connais cette
chanson. Tu connais cette chanson? Oui. Je, क्या आएगा? La. Je la connais. एली नहीं आएगा. Je la connais. Masculin. Femina. आप masculin बोल रहे हो लोग. Je la connais. अब ये वाला बनाओ. Vous prenez les documents. Vous prenez les documents? जवाब दो मुझे. We and make a जवाब. Oui, je prenais. Je les prenais. क्या prend आएगा जो prend les autres. Je les. Je Je les prends. Oui. Je les non. Les Prend. je les Prend. prends. Oui, je les prends. और अगर आप इसको बनाना हो आपको नू के साथ तो कैसे बनाओगे? वी Nous prend. Nous les prend. Nous les Nous prenons. Les nous prenons. les les prenons. prenons. Yes, oui, nous les prenons. Il comprend le problème. Il comprend le problème. Simple बताओ. Without writing. Il comprend le problème. Il le comprend. Il le comprend. Très bien. Il le comprend. Il le comprend. Very good. Tu invites Marie? Tu invites Marie? Tu invites Marie? Tu invites Marie? Oui, je la marie. Yes, oui, je l'invite. Okay. Tu invites la Marie? Oui, je l'invite. Oui, je l'invite. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आए. Oui, monsieur. ये आप ना लाइंस यूज करोगे फॉर योर B2. सी यहां से हमारी जर्नी B2 के लिए शुरू हो जाती है. Before we move further, I want to just simply tell you. Earlier, what we used to do, we used to start the journey of B2 in the B2. Okay, TEF training और बाकी सारी चीजें हम लोग B2 में करते थे. And then we realized कि उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगता है. 3 महीने में वो कवर नहीं होता. 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं. So to cover up in the same timelines, we have now started covering up the things right from B1. So from here, your journey begins for CLB 7. Do not consider yourself for CLB 5. Because I will be passing on the complete information to you up to CLB 7, 8, 9. सब कुछ कराऊंगा मैं आपको यहाँ पे. 3 महीने हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. 3 महीने हम उसके और एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे. We will prepare you for the level of C1 so that in your exam आप जितना मर्जी खबर आ जाओ B2 तो लेके आओगे. Okay, so I am not going to stop anything कि यार ये अब B1 में करेंगे, ये B2 में करेंगे, ये C1 में करेंगे. Nothing like that. Once we'll pick a topic, we'll take it to the logical end. Okay, and then thereafter we'll keep on practicing and practicing. Okay,
सो अब आप देखो B2 लेवल पे और टेफ लेवल पे हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे कि सेट प्रोपोजिशन, सेट प्रोपोजिशन, je, these are all your phrases which you can use for convincing. अभी आपको कराऊंगा कि आपने कैसे यूज करना है. Je la trouve pertinente. Cette préposition, je la trouve pertinente. This preposition, I find it very convincing, very useful, very utile. So, cette préposition, je la trouve pertinente. The mot pertinente. You have to remember these words, guys. I'm giving you very selective words. Right focusing towards your TEF from here onwards. So please use these words. अब देखो मैंने आपको दे दिए ये वर्ड्स, ये चीजें, इसकी यूसेज आपने करनी है, मास्टरी आपने करनी है, परफेक्शन आपने करनी है, और ये परफेक्शन टाइम मांगती है, ये एक झटके में नहीं हो जाएगा. दैट इज वाई वी आर गिविंग यू 6 months टू प्रैक्टिस फॉर टेफ एंड देन गो फॉर टेफ एंड क्लियर इट इन सिंगल अटेम्प्ट. दूसरी अटेम्प्ट नहीं देंगे हम इसको क्लियर करने के लिए. ओके. And now the next, les arguments qu'il a présenté. ये ना présenté में आप वो लगाओगे सारा कुछ मात्राएं. ओके. qu'il a présenté était les arguments qu'il a présentés étaient convaincants. Les arguments qu'il a présentés étaient convaincants. Now, what do you mean by this? Les arguments qu'il a présentés étaient convaincants. The arguments that I have presented was आई कितनों आ गया? हाँ तो इल आई होता है, वापस ए में भेज दूंगा. इल आई है. हाँ. Presentations are The arguments that need. Oh, okay. Third person sir. Third person क्यों होगा? Yes, anyone? The The arguments that he He- presented was convincing. that has been presented. अच्छा है. हाँ. Yes. इधर बोलो आप. हाँ जी, ऑनलाइन कौन बोल रहा था? That was correct. हाँ. The arguments that he have presented was convincing. Yes. The arguments that he had presented was convincing. Now see, these are complex sentences which you have to make. Sir, This I you have can- one doubt. Yeah. तो इसमें हमें IL यूज किया है, सो IL के साथ ET AIT वाला नहीं यूज होगा? Les arguments, क्या लिखा है? Les arguments qu'il a présenté, qu'il a présenté étaient convaincants. Yes, आप étaient में बोल रहे हो. हाँ जी. Les arguments qu'il a présentés étaient convaincants. ओके. तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? वो जो मैंने लिखा है वो ठीक है, बट ऐसा क्यों है ठीक, और जो आप बोल रहे हो वो क्यों है गलत? एनीबॉडी? So Jonathan. Because arguments is plural. You got your answer. Okay. ओके. मैं इल को नहीं लेके कॉन्जुगेट कर रहा. Okay, that was my question. इल के साथ तो मैंने आ लगा दिया ना. Okay. ओके. इल के साथ आ गया. इते ये बनाओ आर्ग्यूमेंट के. Les arguments qu'il a présentés étaient convaincants. Now, see, I'll give you one more complex. Cette stratégie nous l'avons adoptée
Immédiatement. Yes. Cette stratégie, nous l'avons adoptée immédiatement. This strategy we have to adopt immediately. This strategy, we Have to adopt immediately. This strategy we had adopted immediately. Have to be adopted. We have adopted. This strategy we have adopted immediately. It's passé composé. We have. Okay. Cette stratégie, nous avons adopté immédiatement. Got it? Take a minute. Digest it. Read all. So this product is the data algorithm and how can you replace on Hmm? the third में मैं ऐसा दिखाया वो क्यों replace करता Third वाला क्या कह रहे हो? set the product no level Set preposition, je l'ai trouvé. नहीं third सब तो last Et voilà. Cette stratégie, nous l'avons adoptée immédiatement. So what we are replacing here? Strategy. okay set Cette stratégie, nous l'avons adoptée immédiatement. okay Okay, so we are replacing strategy. Cette stratégie, nous l'avons adoptée immédiatement. पर फिर से एक बार नूल आम गल्ला हो गई Nous, नू आम पर लेवल नहीं लगाਉਂਦੇ नहीं नहीं लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कितने लगाओगे? नहीं फिर इन रेगुलर सेंटेंस भी मान फिर तो बेसिक बन जाएगा ना सेट स्ट्रेटजी नू है सेट स्ट्रेटजी फिर वो बनेगा नहीं सेंटेंस क्योंकि फिर अगर तुम चेंज करके बनाना पड़ेगा सेट सेट स्ट्रेटजी वी nous avons adopté cette stratégie immédiatement. Then you have to do it like this. But that's a very basic A1, A2. That's not your B1 or B2 level. So here we are now aiming towards TEF B2 level with complément direct. Okay. अब जैसे हमने इसको चेंज किया अपने टीचिंग स्टाइल को अब हमने B1 में आपको टेफ और B2 तक के लिए चीजें बताना शुरू कर रहे हैं कि यहीं से आपको नॉलेज आ जाए और आपको 6 महीने मिले एग्जाम जाने से पहले और आप लोग थॉरली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए ओके सो ये एक चेंजमेंट है ये एक चेंज किया है हमने जो हमने अपने बेसिक टीचिंग स्टाइल में हमने ऑब्जर्व किया कि इफ वी डू दिस विल गेट बेटर रिजल्ट्स एंड स्टूडेंट्स विल पास ऑन मोर इफेक्टिवली एंड मोर क्लियरली द एग्जाम्स ओके सो उसको अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं कैसे बोलूंगा ce changement je le trouve nécessaire. Ce changement, je le trouve nécessaire. Ou, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ce changement, je le trouve utile. Ce changement, je le trouve utile.
Okay, so you have to think like this and use कि अब हम इसको कैसे further अपने system में लेके जाएंगे. Cette solution, je la préfère. Cette solution, je la préfère. Oh, this solution, yes, I prefer it. Je la préfère. You see the utilization. कितनी जबरदस्त यूटिलाइजेशन है इसकी. जब हम अच्छी फ्रेंच बोलेंगे तो हमें ये सब कुछ बोलना पड़ेगा. Ce problème, je le comprends parfaitement. Ce problème, je le comprends parfaitement. This problem, I understand it perfectly. Comprendre की spelling गलत हो गया. Je le comprends. Je le comprends parfaitement. अब आप किसी चीज से सहमत होते हो और अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं होते हैं तो आप उसको कैसे बोलोगे. आप उसको कैसे बोलोगे. Agree and disagree. So how will you use complement direct for your TEF exam? For, you see, your second part of TEF exam is to convince the examiner. You have to convince the examiner for your second part. And in convincing, you have to say, yes, I am with your approach. I'm okay with it, or I am not okay with it. Okay. So how and what expressions you will use where you will put these things into practice. Okay. So that is what we are going to learn now. ज्यादा तो नहीं हो रहा. Okay. डाइजेस्ट हो रहा है. We Oui, must you. sir. ये फ्राजेस अब आज मेरे उस लय में हूं तो मैं आपको दे रहा हूं. जब कभी लय में ना हो ना तो ये दिमाग में आते नहीं है. ओके. तो आज इसको खत्म करते हैं पूरा. ओके. We must you. हाँ, आज इसको करते हैं. तो अब देखते हैं एक्सप्रीमे accord ou désaccord. What is désaccord? Disagree, Not agreement okay. and Disagree. disagreement, है ना. désaccord. To express. यस. अब एक्सप्रीमे, ये एक्सप्रेशंस कौन कौन से होंगे ऐसे बोलने के लिए जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और B1 B2 लेवल की बात करेंगे. ओके. सो दिस इज सेट opinion, set OPINION, cette opinion, je ne la partage pas. I do not share. Cette opinion, je ne la partage pas. What do you mean by this? This opinion, I do not share. I do not share it. मतलब Well, I don't disagree. agree. I disagree. I'm not of your opinion. Cette opposition, cette option, je ne la partage pas. I'm not of your opinion. और अगर इसको पॉजिटिव में बोलना हो तो कैसे बोलोगे. cette option, je la Je la partage. partage. Cette option, je la partage.
cette option, je la partage. आप किसी भी साथ अगर ओपिनियन को उसके शेयर में हो तो बोलो oui monsieur cette opinion cette option je le partage. और अगर आप उस पॉइंट पे जाके बोलोगे कि नहीं मुझे मुझे तो तेरा ओपिनियन नहीं पसंद है तो आप बोलोगे ah monsieur je suis vraiment désolé de vous dire mais cette proposition je ne partage pas. Ah monsieur je suis vraiment désolé mais cette proposition je ne partage pas. I'm truly sorry but your this proposition. What is proposition? Je ne partage pas. मतलब I am not of your opinion. So instead of using word opinion, you can use proposition. Okay? Cette décision, je la trouve efficace. Cette décision, je la trouve efficace. This decision, I find it, je la trouve efficace. I find it Effective. effective, efficient, good. Yes, whatever. Cette décision, je la trouve efficace. Oui, monsieur, cette décision, je la trouve efficace. Vous avez pris la décision de commencer l'enseignement de TOF. Maintenant, je trouve cette décision efficace. This is your higher level of speaking. Or you can also use here, cette décision, je la soutiens totalement. Totalement, totalement. Cette décision, je le soutiens totalement. मतलब, this decision, I support Totally. this decision, I support totally. Cette décision, je la soutiens totalement. Oui, monsieur, cette décision, je la soutiens totalement. Je la trouve efficace. So you can reinforce your point. Cette décision, oui, monsieur, cette décision, je la soutiens totalement et je la trouve efficace. अब इस पे आप अगर कनेक्टर लगा दोगे, एक ईटी लगा दोगे, तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा. Cette décision, je la soutiens totalement et je la trouve efficace. This is your uphill French. सर पाताज क्या होता है? Share. Partager is a verb which means to share. जब आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ये हो गया आपने कैसे अकॉर्ड दिस अकॉर्ड में इसको यूज करना है एक्सप्रेशंस को. इज इट क्लियर विद एवरीवन? आवाज नहीं आ रही मुझे ज्यादा लोगों की. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. कहीं पे आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा? अगर ज्यादा लग रहा है मैं रुक जाऊंगा कि ओके है? No, monsieur. हाँ? Okay. ओके, यू Okay, एंजॉयिंग इट? Yes, sir. Yes. Je l'amuse. Je l'amuse. Okay. So let's go and let's see how to give examples. जब हमने examples देनी, दोनों les example. आपके उसमें टेफ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है. दोनों
des exemples. आपको हर बात में एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी। हर बात में आपको एग्जाम्पल्स दे के अपने आप को समझाना, दूसरे बंदे को समझाना, वो नहीं भाई ऐसा नहीं, इसको ऐसे करना है। मैं तुझे बताता हूं कैसे, ये एग्जाम्पल है, ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में। सो यू ऑलवेज हैव टू गिव एग्जाम्पल टू कन्विंस द अदर पर्सन, एंड टू गिव दैट एग्जाम्पल what you have to do, you have to use some of the phrases, and those phrases come here. Cette situation, je l'ai déjà vécu. Je lived. Ah, monsieur, cette situation, je l'ai déjà vécu. Yes. We are finished with that. Okay, just give me 5 minutes. I'll be also done with that. 5, 10 minutes. And then you can come and continue the book. Oh, you can terminate that class then. Okay, terminate that. Cette situation, je l'ai déjà vécu. Ce phénomène, ce phénomène, ce phénomène, एक मिनट, ये ना स्पेलिंग के ऊपर, फिनोमिना के ई के ऊपर पहले आप मात्रा डालो, पहले वाले ई के ऊपर एक ही, ओके, फे नो, एंड देन एम विद अगेन ई विद एन एक्सो, सत फेनोमेनन, और ये लास्ट ई के ऊपर एक्शन नहीं आएगा, एक्सियो नहीं आएगा। फे नो मे न, फेनोमेन, ce phénomène, ce phénomène, on peut l'observer dans la vie quotidienne. vie quotidienne क्या होता है? Yes. Quotidien. Ce phénomène, on peut l'observer dans la vie quotidienne. This phenomena, we observe it in our daily life. This phenomena, we observe it in our daily life. Ce phénomène, on peut l'observer dans la vie quotidienne. Ce phénomène, on peut l'observer dans la vie quotidienne. Sir, what is deja vu? Deja, lived. Deja is always. Deja is already. And vécu is the participe passé of the verb vivre. Okay. आप ना कंजुगेशन सुधार लो, देखो आता बहुत कुछ है, बट बोल नहीं पा रहे हो. When you speak, you are not in the position to speak well. This. Always. Ce phénomène, on peut l'observer dans la vie. Hein? Vie quotidienne. Ce type de problème, sorry, ce type de problème beaucoup de personnes le rencontrent. Ce type de problème, beaucoup de personnes le rencontrent. मतलब This kind of problem lot people have experienced. experienced, yes, rencontre, narrated, experience, had, है ना, ये सारी चीजें. Ce type de problème, beaucoup de personnes le rencontrent. बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है. Ce type de problème, beaucoup de personnes le rencontrent. अब
आपने इसको बोलना हो जब आपने अपनी डायलॉग में जा रहे हो, स्ट्रक्चर में आपको उस डायलॉग को प्रेजेंट करना हो, तो आप उस डायलॉग को कैसे प्रेजेंट करोगे? इसी चीज को उठाते हैं, सेट प्रॉब्लेमाटिक। प्रॉब्ले, दिस इज ए विद एन एक्सो, ए वाला एक्सो, प्रॉब्लेमाटिक, मातिक, सेट प्रॉब्लेमाटिक, je vais l'expliquer clairement. Cette problématique, oui, cette problématique, je vais l'expliquer clairement. Oui, monsieur, tu as raison. Mais cette problématique, je vais l'expliquer clairement. I'm going to speak this clearly to you. इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दो हिस्से में दूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। Cette question, je vais, cette question, मेरा je vais la répondre, छोटा हो गया, traiter, ok? Cette question, je vais la traiter en deux parties. Cette question, je vais la traiter en deux parties. या अगर आप तृतीयक नहीं याद करते तो जो बोल रहे हैं रेपो, cette question, je vais la répondre en deux parties. Okay? So you can use any répondre ou traiter. Is to respond. Traiter is to treat. Yeah. बट लाइन में तो इसका मतलब वही हो जाए ना कि मैं इसको ट्रीट करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, दो अक्षर। जब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करने होंगे तो उसके लिए और हम लोग इसको डेवलप करेंगे। बट आई थिंक अब सबके कैमरे बंद होने शुरू हो गए हैं, तो ये चीजें मुझे तो मजा आ रहा करा के, बट आपको ओवर हो रहा है। इज इट लाइक दिस? No, monsieur. ओवर, ठीक है? we are okay with it, sir. हाँ जी, हाँ जी, We are okay with it. ओके विद इट? Yeah, कंटिन्यू करूं, रुक जाऊं? we want to continue. कंटिन्यू, ओके। ओके, थोड़ा सा और करते हैं, देन वी विल स्टॉप। ओके, चलो। बट इसको फिर आपने याद रखना है, ओके? इसको याद रख के आना है कल को जब आप बोलो, तो आप इन चीजों को बोलो। इतना लिखने का मकसद यही है। जब आपने अपना पर्सनल यहाँ पे बताना है ना, पर्सनल ओपिनियन देना है, तो हम वहां पे भी कैसे इसको यूज करते हैं, वो हम लिखते हैं सेट कॉम्पेटेंस। व्हाट इज कॉम्पेटेंस? कॉम्पे, ई विद एन एक्सो, कॉम्पेटेंस, सेट कॉम्पेटेंस। व्हाट इज कॉम्पेटेंस? व्हाट इज कॉम्पेटेंस? According, No, compétence is skill. Compétence is skill. Cette compétence, je l'ai développée pendant mes études. I developed it during my Studies. studies. Cette compétence, je l'ai développée pendant mes études.
तो ये सारा कुछ जो मैंने सीखा, वो जब मैं पढ़ रहा था तब सीखा. Cette compétence, je l'ai développée pendant mes études. तो ये आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हो. सो आप कहीं कभी भी आप कुछ न्यू स्किल सीख रहे हो तो आप बोलोगे कि हाँ ये स्किल मैंने बचपन में सीखा था. तो हाउ विल यू से? That comes right. But more info, channel. Cette compétence, je l'ai développée quand j'étais petit. लिख, ये तो प्ले करो यार अपन वर्ड्स के साथ. Cette compétence, je l'ai développée quand j'étais petit. पति, जब मैं छोटा था. जब मैं छोटा था तब मैंने ये कॉम्पिटेंस डेवलप किया था. As well? कौन? When? Okay. Quand j'étais petit, j'ai développé cette compétence. Le français, le, le français, je, euh, je l'ai appris, je l'ai appris dans une école spécialisée. Le français, je l'ai appris dans une école spécialisée. Spécialisée? Special school, in a special school. The French I learned was in a special school. ये वाला स्किल तो मैं हर रोज यूज करता हूं भाई. ये वाला स्किल तो मैं हर रोज यूज करता हूं. से compétence, ce compétence, je les utilise tous les jours. Ces compétences, je les utilise tous les jours. सर वहाँ पे सेट कॉम्पिटेंस नहीं आएगा? Ces compétences. ओके. यहाँ पे मैंने एस नहीं डाला. ये अब आएगा ces compétences because it is plural. Ces compétences, these skills I use every day. With this, we will close. Cette expérience, cette expérience, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée très enrichissant, enrichissant. Cette expérience, je l'ai trouvée très enrichissante. Enrichissante? What do you mean by enrichissante? Cette expérience, je l'ai trouvée très enrichissante. Enriching. Enriching. This experience I found very enriching. Cette expérience, je l'ai trouvée très enrichissante. Cette expérience, je l'ai trouvée très enrichissante. Now, आज के आपके पास कितने एक्सप्रेशन हो गए? Can you count? एटीन हो गए है ना. दो और कर देता तो मैं आपके 20 हो जाते है ना. चलो 18 आपके पास एक्सप्रेशंस हैं गाइस, और आपको दो छुट्टियां, सैटरडे एंड संडे. उसके बाद जब हम मिलेंगे यहाँ पे,
मंडे विसाखी है तो फिर क्या आपा पाठ करके गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के रब अगे अरदास करके कि परमात्मा आउंदा साल बहुत ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਪੀਆਰ ਲਈਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ओके छुट्टी कोई नहीं है नो छुट्टी 3 महीने के लिए आराम भूल जाओ कोई आराम नहीं है ओके फॉर दिस 6 months वर्क हार्ड वेरी हार्ड अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे मैं आपको टास्क भी देना शुरू करूंगा ओके सो वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू द स्पीकिंग फॉर सेक्शन 1 ऑफ टेफ वेयर आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन 1 में क्या होता है आपको क्वेश्चंस जनरेट करने क्वेश्चंस बोलने हैं ओके सो आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एक जेनरिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो आप हर किसी सिचुएशन में डाल सकते हो देखो टेफ के एग्जाम में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि वो आपको टॉपिक देते हैं बोलते हैं, बोलो and you guys are not ready for that. Okay, so we are going to practice here speaking exactly of TEF module for 6 months. And if we continue to do that, do you think there is any possibility कि आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे 6 महीने बाद अगर हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे बता दो है पॉसिबिलिटी कि नहीं है Oui, monsieur. कोई नहीं मसीह क्या है कि नहीं ये बताओ कि हम है परफॉर्म कि नहीं करेंगे है हाँ हाँ करेंगे करेंगे यस You'll be fine. वो ले भी नेगेटिव बैठा ही कहता सीएलबी भाई भी लड़ा मैं You'll be fine. जानते यार मैं 7-8 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो 5 भी बैठा हुआ है 5 तो 2 महीने बाद जाके पेपर दे ना आ जाएगा 5 तो 2 महीने बाद आपके आ जाएंगे 5 का क्या है Listening to speaking for a lot. कुछ नहीं है कुछ नहीं है सर आप मंडे टेस्ट ले सकते हो जो भी अभी तक कराया है स्पीकिंग लिसनिंग एनीथिंग यस 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 हम 2 दिन में सारा अगर रिवाइज कर लेंगे वेरी गुड आइडिया मुस्कान आप ऐसे आइडिया रोज दिया करो ठीक है गुड गाइस सो मुस्कान का आइडिया हमने पकड़ लिया है तो हम मंडे को टेस्ट करेंगे विसाखी वाले दिन ओके आप लोग ये एक्सप्रेशंस बोलोगे जो मैंने लिख के दिए अभी आपको आई नीड 5 एक्सप्रेशंस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू टू स्पीक ऑफ वेरियस टॉपिक कि जब हमने अपना प्रॉब्लम बतानी है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है जो मैंने आपको सेक्शन वाइज दिया है अकॉर्ड हो द कॉर्ड हो क्या हो है ना वो सारे आपने 5 एक्सप्रेशंस ईच वन ऑफ यू विल स्पीक एंड वी विल हैव वन ये कहां से आ गया आज वी विल हैव वन we will have test for listening and then Monday I will start with you the TEF speaking part